And then if I do talk about the fact that what are basically legal frameworks within health facilities, there is no as such court which deals with the health within Pakistan. But in case of Punjab, we have Punjab Healthcare Commission, which is dealing with all the medical institutes, all the healthcare service providers, all the health departments, and then whoever doctors give you or prescribes a fake or whatever they are doing, a mishap happens with you, or giving you a wrong injection. And in case of the world statistical data, if I quote the WHO World Health Organization, it says 7,000 or above people lose their life within 1 year because of sloppy handwriting of the doctors, because the doctors used to write in a sloppy way. So in that case, in case of Punjab, you can report it to Punjab Healthcare Commission. You can see the logo, and it is located near Kalma Chowk. You can visit the office and you can get all the details. Based on that action, the license of the doctors might get cancelled. So you can play a role while reporting this to Punjab Health Commission. And if the case is above Punjab Healthcare Commission, they refer it to Lahore High Court. Then Lahore High Court takes a bigger action. Then it goes to Supreme Court. But the very basic to report about all this stuff, even the doctors, the nurses, the paramedical staff, whoever health-related person who has such kind of issues with you, you can report it to Punjab Healthcare Commission, which will play a vital role to resolve that issue. And then this is one of the screenshot which I have got from the Punjab Healthcare Commission website. You can see how they receive a license. That is a whole process. But once you report XYZ doctor, they get the license cancelled, and they might face a lot of issues in the future. Everyone must be responsible enough to visit the website of Punjab Healthcare Commission. So as I mentioned previously, that if I do compare the facilities of Pakistan versus US and UK, you will see that what kind of facilities or health system that is available in Pakistan. We do have private and public sector hospitals, but government is spending only 2% of GDP on health. In case of US, they are spending 17% of GDP on health. They have even private and public sector hospitals, and they are spending much than Pakistan. And then in case of UK, they are spending 10%, but much more better than Pakistan. And then in case of Pakistan, we do not have any universal access for rural and urban. There is a gap that always, like, we have one term, like in Punjabi, we used to say, Ananu Lahore le jao. Ananu Lahore le jao is one of a huge slap on the face of the government. Those who is not in Lahore, who is in Faisalabad, Multan, Bhalpur, like XYZ, in rural area, they always face health, lack facilities there. They do not have primary health, secondary health, or huge issues. In that case, we always refer every patient to Lahore, and might be possible during their way, they might lose their lives. So, but the thing is, we have a huge gap between the rural and rural and urban health gap. So in case of US, they have very tight insurance, and remote areas, they have less served, but they do have good facilities. In case of UK, they have national health system. They always go for the coverage and strong outreach program as compared to US. Then in case of Pakistan, we have public, outdated, private, modern in cities. But in case of US, we have they have a very cutting edge technologies, specialized centers. And in case of UK, they have much more upgraded. But as compared to US, they are lacking. But in case of Pakistan, we are lacking into these technologies, all the facilities and specialized centers. And then if I do talk about the summary of all three different areas, I would say Pakistan is lagging far behind thousands of years
back we are lacking. And then accessibility and quality gaps are increasing day by day within Pakistan or as compared to international health facilities. And then reliance on private sector, which is every Pakistani, those who are less than 47%, that poverty in Pakistan is. So if they are less than 47% of Pakistan poverty, they will not afford that good facilities from private hospitals. In case of US and UK, they afford because government is supporting them with the best facilities and world-class facilities. They have fundings, they have health insurances as well. And then one last, if I do talk about the doctors in Pakistan, there is one doctor who knows almost minimum 50, maximum 70 different disease. There is one doctor for 8,750 people within Pakistan. And during COVID, we lost more than 15 doctors. It means if we do multiply 15 with almost 10,000, we can understand that we have lost a lot. So in case of Pakistan, we are facing a huge health crisis. I must say, all those who are having this phone device with you, you must raise your voice, be a citizen journalism, be a citizen journalist, be a citizen, do a citizen journalism and play your role, raise your voice, and be a good Pakistani until unless you will be quiet on health facilities or any kind of facilities which we are lacking in, you are supporting all those facilities as well. Thank you so much. If you have any question, you can ask me. Our first question in the chat is from Abu Zarkan for Dr. Masood. Dr. Masood, in your experience, how can public awareness campaigns be designed to empower patients to identify and avoid quack practitioners without creating mistrust toward genuine healthcare providers? Okay, Yusha. Thank you very much for asking. It's Yusha. 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 Right pronunciation. Thank you very much for asking a question. Basically, the awareness started from the private, public and philanthropics. Three sets जब आपस के अंदर मिलते हैं तो फिर वो awareness के ऊपर काम करते हैं. Quackery, basically, this is the responsibility of, like in Punjab, जो health department है और उनकी जिम्मेदारी है. सिंध के अंदर सिंध के हेल्थ की जिम्मेदारी है क्योंकि उसको कंट्रोल करें. ये जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं, बेसिकली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो मैंने अर्लियर पहले ही कहा था कि अवेयरनेस तो बहुत सारी चीज़ों की दी जाती है. लाइक पोलियो के लिए बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस हम देते हैं. एड्स के लिए हमने काफ़ी सारा काम किया है. एक्सीडेंट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया है. फिर उसमें लेडी हेल्थ विजिटर ने गांव और देहातों में, अर्बन एरियाज़ में जाके बहुत ज़्यादा काम किया है. लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर और ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ के अंदर ये जो कंट्रोल करना है क्वैकरी को, वो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसको यू, मी और कोई दूसरा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द लॉ. एज ए हारिस ने जो मेंशन किया कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ हमारे 50% लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं. हमारे पास खाने को नहीं है बेसिकली. ये जो पिशावर की बात कर रहे थे, केपीके की बात कर रहे थे, सिंध का हाल उससे भी बुरा है. अगर सिंध के रूरल एरियाज के अंदर आप जाएं तो वहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर गधे, घोड़े, भैंसे ये सब बंदी भी हैं. स्कूल्स खत्म हो गए हैं. और ये एक जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज के अंदर है. क्योंकि यहाँ वडेरे शाही जिस तरीके से काम कर रही है, वो ये वाली अवेयरनेस वाले काम करने ही नहीं देते उस इलाके के अंदर. ना वो एजुकेशन को आम करते हैं, ना अवेयरनेस को करते हैं. बल्कि मैं ये बताऊं कि देखें, केपीके के अंदर 2015 के अंदर उस गवर्नमेंट ने एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी लेकर आए थे और इक्वल राइट्स देने की कोशिश की थी फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जब उन्होंने हेल्थ कार्ड इशू किया था जिसके अंदर 1 मिलियन तक का प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप इलाज करा सकते थे. सिंध के अंदर या पंजाब में इस वक्त कोई ऐसी स्कीम नहीं है, या बलूचिस्तान के अंदर तो उसका तो और भी वर्स्ट सिचुएशन है. दूसरा ये कि उन्होंने एनकरेज किया था कि
केपीके के अंदर वो अपने उन एरियाज के अंदर हॉस्पिटल से उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था कि वो फार फार एरियाज के अंदर हॉस्पिटल ऑपरेट करें जब उनको रिइंबर्समेंट होने लगी इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक अच्छा स्टेप्स था और वो शायद अभी भी केपीके गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है। सिंध के अंदर और इस एरिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक, प्राइवेट, फिलेंथ्रोपिक्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को आना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोगों की बेसिकली जिम्मेदारी है। वो जब बात हारिस करते हैं कि यहाँ से कितने लोग ऐसे टेक होम मैसेज लेके जाते हैं कि वो अपने में चेंज लेकर आएंगे, तो बेसिकली हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेंज हम लेकर आए अपने अपने लेवल के ऊपर। इसलिए कि गवर्नमेंट शायद ये नहीं कर पाई क्योंकि इतनी डिटोरिएशन होगी ना, हमारे यहाँ मटेरियलिज्म इतना हो गया है। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आपका ब्रॉटअप नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। आपको लोगों को इन्वॉल्व किया वही ब्यूरोक्रेसी ने, सियासतदानों ने, कि आप बिजली का बिल भरने में लगे हुए हैं, आपको 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होने पड़ता है, गैस नहीं आती है, बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। प्राइवेट सेक्टर को हमेशा ये सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने सियासतदान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं और दूसरे जो हैं, वो सारे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जाते हैं क्योंकि वहां से अर्निंग बेतहाशा होती है। तो अगर एज ए पाकिस्तानी हम सोचेंगे इन 77 ईयर्स के अंदर हमने तरक्की नहीं की, अगर हम अपनी विसिनिटी में देखते हैं ना, जो सराउंडिंग कंट्रीज है, हमारा जो नेबर कंट्री है, बांग्लादेश का हाल देख रहे हैं, दे आर गुड, हमसे बेहतर है। श्रीलंका हमसे बेहतर है इन सारी चीज़ों के अंदर कि वहाँ लिटरेसी रेट्स बेहतर है, उनको मेडिकल एजुकेशन ही मिलती है, और कानून तो यहाँ लॉस बनते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन वो बात वही हारिस की कि जब खाने को नहीं है तो लॉ के ऊपर कैसे आप जाके लड़ेंगे। और ये सारा हमारे मटेरियलिज्म की वजह से है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने में चेंजेस लेकर आएं, और जो प्रोजेक्ट इनिशिएट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिस्ट की तरह हों, तो वो सारे मिलकर करें, तो इंशाल्लाह ताला उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कंपेन भी बहुत बेहतर हो सके। Thank you for Eight that point which I insightful want to share response, here. sir. I need to add Okay, one okay. point here. Yes, sir. Go on. श्योर। Actually, sir, what you did talk about कि पंजाब क्या कर रहा है, सिंध क्या कर रहा है, केपी में क्या हो रहा है, एंड बलूचिस्तान में क्या हो रहा है. Leaving all these provinces aside, फेडरल हमेशा हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करता है. When we do talk about the federal government, they always set example for us. सर, इस वक्त का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल. कमाल की शख्सियत है. यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके से उनकी एमबीए और मार्केटिंग की डिग्री है, एंड ही इज हेल्थ मिनिस्टर. जबकि चाइना के अंदर हमारा नेबर कंट्री है, वहां पे वन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, ही वाज ऑप्टेड फॉर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन प्रीवियस टर्म, क्योंकि उनकी पब्लिकेशंस एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा थी. वी डू नॉट हैव द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब इन फेडरल और इन एनी प्रोविंस. पहला शिकवा तो मुझे वफाकी हुकूमत से है. दूसरा, बीइंग पाकिस्तानी, हमें भी इस चीज का ज्यादा इल्म नहीं है कि सेहत के मामले में यू ऑलवेज डिजर्व अ गुड हेल्थ, यू ऑलवेज डिजर्व अ डिग्निफाइड हेल्थ. इसके लिए 1973 के आइन के 4 आर्टिकल्स हमें डील करते हैं. नंबर 1 इज 9, नंबर 2 इज 14, नंबर 3 इज 37, नंबर 4 इज 38. इनका हमें इल्म नहीं है. आर्टिकल नंबर 9 से 29 तक बेसिक राइट्स हमारी हैं, उनको हम नहीं पढ़ते हैं, और फिर हम बात करते हैं कि हमारी राइट्स हमारी, वी डोंट नो. तो पब्लिक में भी और वफाकी हुकूमत दोनों में इतना गैप है, चाहे वो हेल्थ का निज़ाम हो, चाहे वो एजुकेशन का निज़ाम हो, दोनों हमारी कंट्रोल से बाहर है. 71 में बना बलोचिस्तान, अपना बांग्लादेश, आज उनकी इकोनॉमी सर, पाकिस्तान की इकोनॉमी $4 बिलियन पे आई थी लास्ट टाइम, जबकि उसी वक्त बांग्लादेश की इकोनॉमी $50 बिलियन पे थी. इंडिया की इकोनॉमी 47 का बना इंडिया हमारे साथ सर, $570 बिलियन की इकोनॉमी थी, और हम हेल्थ पे करेंगे ओनली 2% ऑफ जीडीपी. वी आर इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ, we are investing maximum 4 or 3 or 3.4 or 4% जीडीपी on education. बेसिक फैसिलिटीज किसी भी कौम की तरक्की और तनज़ुली या जवाल का वहां से नतीजा लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट की इस वक्त बेसिक बुनियादी सेहत और तालीम पर कितना इन्वेस्ट करता है. थैंक यू.